With the great name of Allah Almighty, who is Rahman and Rahim, dear students, viewers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am Salim Hassan, ID expert. One statement of our last beloved Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi fariza ala kulli Muslim. Seeking knowledge is a duty on every Muslim. In connection with your computer science practical, dear students, you know very well that Federal Board has announced date for the first annual examinations 2023 and 24 of SSC 1 and SSC 2. Dear students, you know, I hope that you would be preparing for that exam. Dear students, you know that Federal Board has decided to conduct your computer science practical in examinations hall rather than in computer science lab, which is known as a PBA, practical based assessment. Federal Board has uploaded instructions for teachers, paper pattern and syllabus as well. Syllabus including Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Windows 10 and Urdu in page 2009. Dear students, Federal Board has decided to conduct your computer science practical in examinations hall rather than in computer science lab, as I told you earlier. This time those students can attempt 100% computer science practical who have hands-on experience, who have performed the practicals in computer lab as well as in their homes. This time it is not so easy if we compare the practical with the traditional, with the old one pattern. Now the new pattern is, I think so it's easy, but for those students who have hands-on experience in, as I told you earlier, that the syllabus is in MS Word, MS Excel, Urdu in page and also the Windows 10 included in paper, which is known as a PBA. So you have to attempt, you will be given 45 minutes and within 45 minutes you have to attempt. According to the pattern, you can also download the paper pattern and also the syllabus, which is available in their website. If we talk about, if we discuss about the paper pattern, that there are two sections in new pattern, section A and section B. In section A is 60% and section B is 40%. In section A there are many questions as well as their parts, and in section B also there are many questions and their parts. So if we talk about the MS Word, which is, if you have performed the practical, so it's so easy because you have to understand and memorize that how many tabs are there. For example, in MS Word 2010 there are 9 tabs. So each and every tab has a groups and each and every group has options. So they can also give you the I want to tell you that, for example, if they want to ask you the procedure of how to save a file on desktop, how to change the name, how to rename a file, how to open a file. So these are the procedures are there, but there are also the shortcut keys are there which are frequently we use, like how to save file, what is the shortcut key for saving a file, opening file, cut, copy, paste, bold, underline, and also the alignments of the margins like the center, left, right, and the justifying. But also many shortcut keys are there, so you have to memorize the frequently shortcut keys. I'm talking about regarding the MS Word. So from every angle
of, if I want to tell you the MS Word, you have to perform the practical again and again. And if we talk about, if we discuss about the MS Excel, so you will have to memorize and understand the formulas, and the I want to say you that the functions as well, like the sum function, like the average, how to find out the average, how to calculate the sum of total, the numbers. And also you have to understand that how many cells, how many rows are there in Microsoft Excel 2010. And there is also the extension of MS Excel, which is, dot xlsx, .xlsx. And if you discuss about the extension of MS Word 2010, which is .docx, understand? So these are, very important, the extensions of MS Word, MS Excel, and as well as Urdu in page. There is one thing I want to add the more, which is, that how to get a print, what is the shortcut key of, the print, how to preview. So these are very important for MS Word and as well as MS Excel. There is another thing, which is they can ask you that what is the default, the location of while saving a file in MS Word or in MS Excel. And what is the, they can also ask, if I talk about, the MS Word, they can ask you that whenever you load the MS Word, so what is, the, I want to tell you that what is the the default name of MS Word, understand? And there is also, one thing is that what is the font name and as well as the font size by default. So the default location of while saving a file, default, the size of the font size, and as well as the font name. So these are very important. So you have to understand the procedures of all these things. So I want to tell you again one thing, that those students can perform the practical who have hands-on experience, who have performed the practicals again and again, whether in Urdu in page, MS Excel, and MS Word. Another thing is, I want to tell you that about, the MS Windows 10, that what is the procedure of creating a file, folder on desktop as well as in the different locations. By default, where you can, by default, the file, what is the location of saving a file in, Windows 10? What is the procedure of changing date, time as well? What is the procedure of creating a new user account? So you have to understand from these all aspects, from every angle, I want to say. So this is all about, the new pattern, which is, this time federal board will conduct your practical. I want to tell you again that your practical will be conducted. They have decided to conduct your practical in examinations hall rather than in computer lab. So there will be no facility of, you will be not given the facility to sit in front of computer to perform the, the practical. So again, I want to tell you that those students can attempt all these questions, which is known as the PBA based paper pattern, who have तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जानते हैं बेटा कि इस मरतबा फेडरल बोर्ड ने डिसाइड किया है कि आपका कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल जो कंडक्ट करेंगे वो एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, ना कि वो कंप्यूटर लैब में करेंगे।
तो ये जानकारी रखिएगा, ये जहन में रखिएगा और इससे फुली तैयार रहिएगा। और वही स्टूडेंट्स अच्छा प्रैक्टिकल पे जो पेपर है प्रैक्टिकल का अटेंड कर सकेंगे, वही स्टूडेंट जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी, जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे, जो उनकी अपनी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पे उन्होंने पेपर पैटर्न, सिलेबस और इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर्स उन्होंने अपलोड किया हुआ है। आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं। पेपर पैटर्न के लिए आपको 45 मिनट जो है वो दिए जाएंगे, जो कि जो नया पैटर्न है विच इज़ नोन एज PBA प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, उनके लिए 45 मिनट है। दो जो है वो इनके अंदर सेक्शंस है, ए सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो 60% का है और सेक्शन बी जो है वो 40% का है। सेक्शन ए की बात अगर की जाए तो उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उनके पार्ट्स हैं, और सेक्शन बी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उनके काफ़ी सारे जो है वो पार्ट्स जो है वो हैं। और उसी के अंदर एक आंसर शीट के अंदर जो है वो स्पेस भी होंगे, स्पेस भी होगा और क्वेश्चन भी होंगे। अब आपको करना क्या है, माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि टीचर्स हजरात ने आपको पूरा बताया होगा, इस हवाले से प्रोसीजर बताया होगा, तरीक़ेकार बताया होगा न्यू पैटर्न के हवाले से। कि अब थोड़ा सा मज़ीद और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं MS वर्ड की बात करूँ तो MS वर्ड के अंदर उनकी शॉर्टकट कीज़ और उनके टेब्स याद करना कि 9 टेब्स हैं और हर एक टेब के अंदर कितने ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है। तो जैसा कि अगर मैं एक बात आपसे पूछ लूँ कि अगर मैं टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ MS वर्ड के अंदर, तो वो टेबल की ऑप्शन किस जो है वो ग्रुप के किस टेब में है, ठीक है। तो इस तरह से वो काफ़ी सारे जो है वो इस तरह से प्रोसीजर्स मालूम करेंगे आपसे, आपसे सवालात जो है वो किए जाएंगे। प्रोसीजर आपसे ये भी मालूम किया जाएगा कि हम प्रिंट जो है वो कैसे लेंगे, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, फ़ाइल जब हम सेव करते हैं पहली मरतबा तो फ़ाइल की जो डिफ़ॉल्ट जो नाम है उनका वो क्या होता है, टाइटल बार जो है वो मतलब कि वो नाम कहाँ पे शो किया जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। और इस तरह से फिर आपकी जो इस हवाले से जो इनकी जो शॉर्टकट कीज़ है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है MS वर्ड के अंदर, उससे उसके बारे में जो है वो पूछा जाएगा। और अगर एक्सेल की बात की जाए, एक और बात मैं करता चलूँ कि इसके अंदर एक्सटेंशन जो कि MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या है, जो कि है .docx MS वर्ड 2010 की, आपने उसी पे ही जो है प्रैक्टिस जो है करनी है। और साथ में एक और चीज़ कि जब हम MS वर्ड लोड करवाते हैं, जब हम MS वर्ड लोड जो है वो करवाते हैं तो उस वक्त हमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो क्या होता है, और इस तरह से जो फ़ॉन्ट नेम जो है वो क्या होता है। MS एक्सेल के अंदर कितनी रोज़ हैं और नंबर ऑफ जो है वो कॉलम्स जो है वो कितने हैं, ठीक है। इनके अंदर आपने जो ज़्यादातर फंक्शंस है जैसा कि एवरेज मालूम करना, सम जो है वो मालूम करना, मिनिमम मैक्सिमम मालूम करना, और इस तरह से जो है वो इसका प्रोसीजर के जो जब नंबर जो है सेल्स में जब वैल्यूज़ आती हैं तो डॉट के बाद जो बाकी ज़ीरोज़ हैं वो हम चाहते हैं कि एक ज़ीरो हो या दो वैल्यूज़ हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो उनका क्या प्रोसीजर है, इनको कम कैसे किया जाए या बढ़ाया जाए। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों की जो है ना मालूमात रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो है वो ये भी जानकारी रखेंगे कि उर्दू इन पेज में भी उनका फ़ाइल को सेव करना, ओपन करना, इस तरह से जो है वो। फिर अगर मैं ये बात करूँ कि विंडोज़ 10 की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, उसके अंदर फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के कैसे जो है वो होता है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं वो फ़ाइल की नाम जो है वो फ़ाइल का नाम चेंज करना चाहूँ तो वो उनका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो डेट कैसे चेंज की जाती है, टाइम कैसे चेंज किया जाता है, उनका प्रोसीजर जो है वो मालूम करना, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक आइकन्स जो है वो कितने हैं, वो कौन से हैं, उनके नाम जो है वो याद करना, ठीक है। इसके साथ साथ फिर जो है वो शॉर्टकट
जो है वो क्रिएट करना डेस्कटॉप पे, उनका प्रोसीजर जो है वो किसी भी फाइल या फोल्डर का या किसी प्रोग्राम का जो है वो प्रोसीजर वो आपसे पूछ सकते हैं, उनके स्टेप्स जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये है ओवरऑल जो हमारी चार जो प्रोग्राम है इस सिलेबस के अंदर, जो कि है क्लास 9th के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। दोबारा से मैं रिपीट करता चलूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, MS एक्सेल 2010, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 और उर्दू इन पे 2009। ठीक है, इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं।